As you all know that from today everything is online, and if we talk about online, there is so much of threats is combined with the word of online. Today we will learn about the threats and how we prevent from that threats. Threats to computer security. A threat is a potential violation of security. मतलब हम कैसे हमारी सिक्योरिटी को तोड़कर कोई हमारे फोन के पासवर्ड के होने के बाद भी हमारे फोन में अटैक कर सकता है. That is the potential violation of security. When a threat is actually executed, it becomes attack. It is a digital attack. No one is harm you with the help of any kind of arm, but it harms you and your softwares, your computer, your personal data without using any kind of arm. Those who execute such actions or cause them to be executed are called attackers. The job done by those persons, the persons are called attackers. Now we talk about common threats or common problems we faces when we doing work online. Virus, spyware, adware, spamming, PC instructions just like denial of services, password guessing, that means our systems corrupt our passwords automatically. Phishing is a kind of attack which is harm our personal data. It's very harmful for our photos, our personal passwords, secure data. Now we learn about computer virus. Computer virus are the malicious code or programs that cause damage to data and files on a system. ये एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारे कंप्यूटर में अपने आप एंटर हो जाता है विदाउट आवर परमिशन. हमें पता भी नहीं लगता कब हमारे सिस्टम में, हमारे फोन में, हमारे लैपटॉप्स में ये एंटर हो जाता है. इट कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लाइक बूट ब्लॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एरिया, फाइल्स एंड एप्लीकेशन. It attacks our personal information, our personal documents, delete our documents without our information. Two other similar programs also cause virus like worms and Trojan. Worms are, as we all know that worms is copied ourselves. Worms became 1 to 3 in a second, just like a computer worm. A worm is a self-replication programs which eats up the entire disk space or memory. A worm keeps on creating its copies until all the disk space or memory is filled. Worms क्या करते हैं, अपनी कॉपी बना देते हैं, खुद को रिपीट करते रहते हैं, तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारी डिस्क का स्पेस फुल ना हो जाए. Worms harm to a computer or a computer network by consuming bandwidth and slow down the network speed. It also harmful for our net speed also. After the worm has infected a system, it can propagate to other systems via internet. That means our internet is used by others also without our information, without using any kind of password. Trojan horse. As you all know that the speed of horse is very high. That's just like that Trojan horse virus is very harmful. Is a program that appears harmless such as text editor or a utility program but actually performs malicious functions such as deleting or damaging files. ट्रोजन हॉर्स वायरस अगर आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में, आपके लैपटॉप में एंटर हो चुका है तो वो आपकी फाइल्स को, आपके इंपॉर्टेंट डेटा को आपकी इंफॉर्मेशन के बिना ही डिलीट कर देगा. अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है तो वो कब डिलीट हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक वायरस वो है जो है बट दिखाई नहीं देते हैं. With help of Trojan, harm that could
be done by the hacker or target computer systems are. ये क्या करते हैं? डेटा थेफ्ट, डेटा को चोरी कर लेते हैं. इंस्टॉलेशन ऑफ अनवांटेड सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आपको नीडेड नहीं है वो भी ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम्स पे इंस्टॉल हो जाते हैं. की स्ट्रोक लॉकिंग, दैट मीन्स आपने पासवर्ड नहीं लगाया है फिर भी आपका सिस्टम ऑटोमेटिक आपसे पासवर्ड की रिक्वायर्ड करता है. डाउनलोडिंग और अपलोडिंग और फाइल्स एंड मैनी मोर, आपने कोई भी इंटरनेट पे साइट ओपन करी, वहां से आपको कोई फाइल डाउनलोड नहीं करनी है, वहां पे कोई पिक्चर अपलोड नहीं करनी है, बट ये ऑटोमेटिक आपकी फाइल को वहां पर अपलोड कर देता है. दैट मीन्स आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होना तय है. डैमेज कॉज्ड बाय वायरस, अब अगर आपके सिस्टम में वायरस है तो उससे आपको क्या हार्मफुल क्यों है वो आपके लिए? डैमेज और डिलीट फाइल्स, सम वायरसेस में डिलीट और डैमेज रैंडम डॉक्यूमेंट्स और स्पेसिफिक फाइल्स दैट आर क्रूशियल टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम. As you all know that so many of files are there in our operating system which are working on operating system. Without that files, the operating system is useless. They delete those files. Slow down your computer. They slow your computer speed because as in previous session we know that the worms are create their replicates. They made their replicates one by one. So that slow down your computer speed also. Invade your email programs. Some forms of viruses may wreak even more havoc by spreading themselves to the contact to your address book. Spyware is a software which is installed on your computer to spy on your activities and report these data to people willing to pay for it. स्पाईवेयर कोई है जो आपकी इंफॉर्मेशन के बिना आपके डेटा को देख रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है और आपका डेटा उन तक पहुंचा रहा है जो आप नहीं चाहते हैं. जैसे आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट आपके सामने एक्सेस होती रहती है. जस्ट लाइक दैट दीज आर स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर. Spyware mostly get installed on your PC without your consent. They gets installed when you visit any illegitimate website or download music videos, etc. That's why we say that please don't download any kind of software which you don't need or which have viruses within it. Damage caused by spyware compromise your data, computing habits and identity. The main cause defined by spyware is it damage your personal data, it steal your personal data and spread your personal data with the agencies. They hire the spywares or spy persons to steal your data. Alter PC settings, can alter settings like web browser, home page placements or desktop icons, which may be annoying. Slows down your PC, can slow down systems and internet speed and become big problem. If your system is working slow, it's very boring to work with systems. Adware, programs that deliver unwanted ads to your computer, generally in pop-ups. They consume bandwidth similar to spyware, but it may be installed with your consent. Damages are. Adware means frequently there are so many of ads are displayed in your screen without your information. You download that software if you want, but the adware tracks information like spyware, display arrays of annoying advertisement, slow down your PC and your work also. If so many of ads are displaying, then your works are also not working properly. Spamming means sending of bulk mail by an identified or unidentified source in non-malicious form. Bulk advertising mail is sent to many accounts in malicious form. Just like email bombarding, the attackers keeps on sending bulk mail until the mail server runs out of disk space, damages, etc. That means they send you so many of mails
unwanted emails which you don't need to carry out, but they sending your emails even though when your email spacing is full. The drawback of spamming is spam eats up your time. Deleting spam emails like the simple solutions, but it eats a significant amount of your productivity. Spam can lead to worse things. Spam message may contain offensive, fraudulent material or can even be used to spread virus. Just like अगर आपने कभी कोई spam mail को open कर लिया to curiosity, to check that what they sites want to say, हो सकता है आपके सिस्टम में तभी एक वायरस की एंट्रेंस हो जाए और आपको पता भी ना लगे. Eavesdropping. Do you ever find that when you are talking to someone else, another person is secretly trying to listen to your talks? कभी आप सोचिए कि आप किसी से कोई पर्सनल टॉक कर रहे हैं और कोई चोरी छुपे आपकी बात को सुन रहा है. That is eavesdropping. Have you ever tried to secretly listen to the conversation between two teachers regarding your class? If yes, then what you have done is eavesdropping. For example, आपकी क्लास के कोई दो बच्चे भी आपस में बात कर रहे हैं और आप सीक्रेटली उनकी बात को सुन रहे हैं. That is eavesdropping. In context of network security, eavesdropping refers to unauthorized access to another person's or organization data while the data is on its the way on the network. यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप कोई किसी को कोई मेल सेंड करते हैं, किसी को कोई डेटा सेंड करते हैं, तो हो सकता है कि आपका वो डेटा रास्ते में ही किसी और कोई और आपकी उस इंपॉर्टेंट मेल को या इंपॉर्टेंट डेटा को कोई वॉच कर रहा हो. The drawbacks of eavesdropping is by setting on a parallel telephone lines. कैसे हो सकता है, आपके टेलीफोन लाइन के साथ किसी ने एक टेलीफोन लाइन अटैच कर लियो. By installing some softwares just like spyware softwares in the target computer. By installing some receivers which captures the data while on its way. Phishing. It is criminally fraudulent process of attempting to acquire sensitive information such as username, password, credit card information, CVV number, etc. आपने अक्सर सुना होगा, हमसे कहा जाता है don't share your CVV numbers, don't share your OTP with any unknown person. That is phishing. With the help of phishing, they try to steal our money also. Pharming is an attack in which a hacker attempts to redirect a website's traffic to another bogus website. That means your information is sent to a website which is not a डिफाइन और विच इज नॉट अ वेबसाइट जो कि आपके हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको सजेस्ट करा है या वो इंडियन गवर्नमेंट से पास वेबसाइट है, वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन को पहुंचा दिया जाता है इस वायरस पे. अभी हमने देखा प्रॉब्लम्स, देन नाउ वी कंसर्न टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. देयर आर टू वे ऑफ सेफगार्डिंग आवर कंप्यूटर सिस्टम, एक्टिव प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग मेजर्स. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एक्टिव प्रोटेक्शन. Installing and properly using an antivirus software that includes internet security also. आपको वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करनी चाहिए जो इंटरनेट सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, which include protection against threats such as virus, spyware and PC institutions, is vital for proper protection against the hackers, intruders and wrongdoers. दैट मीन्स ये आपके सिस्टम में उनको आने से रोकेंगे जो आपके सिस्टम के लिए, आपके फोन के लिए, आपके फोन के डेटा के लिए, आपके मोबाइल डेटा के लिए हार्मफुल है. प्रिवेंटिंग मेजर्स आप क्या कर सकते हो? इवन दो सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में एक्टिवली डिटेक्ट एंड एलिमिनेट मैनी थ्रेट्स योर पीसी एनकाउंटर्स. एंटीवायरस होने के बाद आपके बहुत सारे जो वायरसेस है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्व हो जाती है बहुत सारी प्रॉब्लम. उसके बाद भी आपको क्या करना होगा अपने सिस्टम को सॉल्व करने के लिए? क्या करना होगा? यूज एंटीवायरस एंड एंटीवायरस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर और कीप योर सिस्टम अप टू डेट. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप योर एंटीवायरस एंड योर सिस्टम्स अप टू डेट. डू नॉट डाउनलोड और ओपन अनसॉलिटेटेड ईमेल अटैचमेंट. जो आपको नहीं पता कि आपको ये ईमेल किसने भेजा है, तो प्लीज डोंट डाउनलोड दीज ईमेल्स. Don't click on the link in email, rather type the URL on
address bar. Check for security alerts. Disable running scripts and cookies. When we open any kind of website on internet, the message flash in the website is that the website contains cookies. If you know that the website contains cookies, that means this website is harmful for your system. So please do not open that kinds of websites. Download updates regularly. Run frequent full system scan. Time to time scan your system fully. Then keep your email address private. Use encrypted connection always if you have to provide sensitive information like your email address, your email ID. Please do not save your account passwords in your phone or in your mobile, or do not share your OTPs with another persons. Install protection software such as internet security softwares. Take the computer offline. It may reduce the probability of infecting other devices in the same network with malware. Don't open emails from unknown sources or click on links embedded in suspect messages. अगर आपको नहीं पता कि ये ईमेल आपको कहां से आया है, किसने भेजा है, तो do not open that kind of emails. And always keep your computer on offline mode. Also, rather than clicking on link, you can type general link on your web browser if you are in double don't click option. That means अगर आपको लग रहा है कि ये कहीं से भी आपके लिए हार्मफुल है, तो प्लीज यूज डोंट क्लिक इन योर माइंड.